ऑल इंडिया इंटर जोनल वेटरन क्रिकेट चैंपियनशिप 2024 मैच 2 आरडीसी ग्राउंड से लाइव। आज का मैच वेस्ट जोन वर्सेस सेंट्रल जोन। मेरे साथ है सेंट्रल जोन के कप्तान जयप्रकाश यादव जी, वेस्ट जोन के कप्तान विपुल पटेल जी और मैच रेफरी अमरजीत सिंह जी। सर, हेड से कॉल टेल। सेंट्रल जोन ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है। गुड लक। नेक्स्ट टाइम से हम लोग उनसे पहले ब्रीफ कर देंगे तो उनको हम एक सवाल भी पूछ सकते हैं।
फिरोज से ही देखना पड़ेगा। स्कोरर महोदय, भाई देंगे क्या टीम शीट? हाँ टीम शीट दे दो ब्रो। जर्सी नंबर के साथ देना, क्योंकि नहीं दिए क्या? अरे फिर खिलाड़ी को पहचानने में दिक्कत जाएगी बहुत। यार जर्सी नंबर ब्रो। ऑल इंडिया इंटर जोनल वेटरन क्रिकेट चैंपियनशिप का यह पहला दिन मैच 2 आरडीसी रायपुर से लाइव सेंट्रल जोन वर्सेस वेस्ट जोन के मध्य। सेंट्रल जोन के कप्तान जेपी यादव ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। जल्द ही यह मैच अब आरंभ होने की ओर। बुलाने के लिए बोल रहे हैं, बोलो। दोनों टीमों से निवेदन है कि एक एक्स्ट्रा प्लेयर कमेंट्री बॉक्स और स्कोरिंग बॉक्स में भेज देंगे, कृपया करके। दोनों टीमों से निवेदन है। First ball goes through the batter and goes for 4-2. JP Yadav starting with spin. बाई का इशारा एम्पायर का। बल्लेबाज और विकेट कीपर दोनों से मिस होती हुई गेंद। Javed's second ball has been played away towards that cover fielder. Left-handed batter starting the innings then. Really short boundaries everywhere. Miss hit. Another thing, Nitesh, that you can notice on this ground, there is a natural slope that goes away from the commentary box where we are right now. बिल्कुल। बाउंड्री की जहां तक आपने बात की, मैंने कुछ देर पहले ग्राउंड स्टाफ से बात की थी। 52 मीटर की बाउंड्री है, जो सीधी बाउंड्रियां हैं। और अच्छी गेंद, और गेंद जारी है बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में। 4 रन। एम्पायर का इशारा।
फिर से चुके, देखना होगा एम्पायर का इशारा। बल्ले से लगी है गेंद और निश्चित तौर पर एक और बाउंड्री। अच्छी शुरुआत वेस्ट जोन की। So very good start indeed. And they need that. Any over that goes below 10 runs per over here is a good over here, Nitesh. जी बिल्कुल। That should go all the way. Yes, it is. Pocket size boundaries here. Once it was struck firmly, it had all the elevation and the power. Good cricket shot to end the first over. 18 came from that one. बहुत अच्छी शुरुआत वेस्ट जोन की। लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। छोटी बाउंड्री 52 मीटर की बाउंड्री है अगर स्ट्रेट बाउंड्री की बात की जाए, और अगर स्क्वायर बाउंड्री की बात की जाए तो 60 मीटर की बाउंड्री है। और मैंने ग्राउंड स्टाफ से बात की थी तो विकेट के बारे में भी उन्हें बताया था कि शुरू में थोड़ा उछाल ज्यादा रहेगा, उसके बाद उछाल थोड़ा कम होता जाएगा, बट फिर भी ओवरऑल 40 ओवर तक यह विकेट बहुत अच्छा रहेगा। Absolutely, Nitesh. I looked at the surface as well. Looks like a very, very good surface altogether. There is even covering of grass as well. And only barren on both the ends where you not necessarily want the grass to be. Bowlers will use more towards the 6 meter, 5 meter mark here. But yeah, no matter what you do as a bowler, it's very, very difficult to stop the runs from being leaked. और ऑन स्ट्राइक हिरल हिरल नायक Hiral on strike. A single down to deep backward square leg, Nitesh. बिल्कुल अच्छी शुरुआत है। 19 रन बन चुके हैं 20 ओवरों का यह मैच। और अगर आपने जैसा कहा कि 10 रन से कम अगर स्कोर आ रहा है तो वो गेंदबाज की एक तरह से मॉरल विक्ट्री है, जीत है। Yes, as a batting unit, Nitesh, you're targeting 2 or 3 deliveries every over. If you can convert even 2 boundaries, that's it. You're done. But having said that, if you've got the matchup in favor, keep going. अभी लेफ्टी कौन है मयंक थैंक यू Now, see, from this particular end, Nitesh, ideally the ball should be going away from the left-hander with the slope. Maybe that's what we saw of that particular delivery. It looked like it beat the batter off the outside edge. थर्ड मैन की तरफ खेलने का प्रयास किया था पर बल्ला नहीं लगा पाए, और देखा जाए 2 फील्डर बाहर हैं जो Now, what he's trying to do is asking the bowler to go shorter. That's why he's trying to use his feet here. The first 2 balls were very much on a decent length. The batter is just trying to get the bowler off that length here. If he can come down the track and connect one, he'll make the bowler go shorter. The length was pulled back this time, and it allows an easy single on the onside. अच्छी गेंदबाजी मुक्तबीर की। इस ओवर में 18 रन आए थे पहले ओवर में, और प्रयास किया है इस ओवर में ज्यादा रन ना जाएं। स्ट्राइक पर हैं अब। Hiral on strike. He takes a step towards the bowler, only taps it towards deep backward square leg.
क्या आइडियल स्कोर हो सकता है इस पिच पर? 400 run. Anything below that, I think the fielding team would have done better. Nicely glanced. Quality shot indeed. No, on a serious note, I think you're looking to get past the 200 run mark. That's the bare minimum. Okay. 22 after 2. बहुत अच्छा ओवर मुक्तबीर का, सिर्फ 4 रन आए इस ओवर से, That कोई is- बाउंड्री नहीं. That is gold dust. Seriously, Nitish. To do that on this surface, at this ground, with the power play going on, that's very well bowled indeed. Change in bowling from JP here. In fact, that is the impact player. Ashish. Round the wicket, hit with the angle, hit it nicely too. Now from the opposite end, the slope is coming into the batter. And that's very well played indeed. काफी अच्छा शॉट मयंक का. अभी तक मयंक ने ही बाउंड्रियां लगाई हैं और स्कोर को लगातार आगे बढ़ाने का प्रयास मयंक का. कोई फील्डर नहीं मिड विकेट की दिशा में. Ashish just trying to open his shoulders up. Maybe will try and bowl a slightly harder length this time. Use the shoulders a bit more. Now he's gone fuller and that's in the arc. It's disappeared over that dugout. Really good hit. Massive 6. लॉन्ग ऑफ के ऊपर से. बिल्कुल एम्पायर को महोदय को मशक्कत करनी पड़ेगी गेंद को वापस मैदान में लाने के लिए. Yes, it has gone over the tent. Let's see what the response is from Ashish. Once again, out of here. Pretty much in the arc and another very, very good shot indeed. तीसरा छक्का या मयंक का. छक्कों में डील करते हुए मयंक. Nitesh, I have a feeling as a bowler, no matter what phase of the innings you're bowling here, you should consider you're bowling in the death overs. So think of a fact that you're bowling the 17th, 18th, 19th or 20th. So similarly, you try and nail the Yorkers, the wide Yorkers, the slowies. If you just try and think that you're bowling with a new ball, you want to bowl a decent length, batters will hit you. That's what we have seen in this over. Change of angle. And well bowled indeed. एक बात बताएं बाबा कि नई गेंद से यॉर्कर डालना क्या आसान होता है या मतलब? देखिए, मैंने बहुत सारी क्रिकेट मेरी बैटिंग से ही खेली है, लेकिन जब भी मैंने ऑब्जर्व किया है तो कभी कभी क्रॉस सीम पे भी यॉर्कर कर देते हैं नए गेंद के साथ. होता यह है कि आपको स्विंग कंट्रोल करनी पड़ती है, इसीलिए आपको एंगल मैनेज करना पड़ेगा.
अगर आप देख रहे हैं आउटस्विंग हो रहा है तो शायद थोड़ा सा क्रीज के पास से अंपायर के बगल से जाएं, और वहां से अगर आप वाइड यॉर्कर करते हैं तो फिर वो स्विंग होके वाइड होगा नहीं। लेकिन बात यह है कि इन सब प्लेयर्स के पास वो अनुभव है, they have done it at the best of stages. So now it's just about channeling those skills once again. Last minute field changes there. I think they want the deep midfielder to come inside. No, they stay with the deep mid wicket on the boundary. It's a quick run on the onside. अच्छा रन। हिरल की कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा मयंक को स्ट्राइक पर रखा जाए, बड़े शॉट्स लगा रहे हैं और हिरल वही कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें स्ट्राइक रोटेट करके उन्हें स्ट्राइक का मौका दिया जाए। थोड़ा वापसी भी करते हुए आशीष इस ओवर में। Now he has to close this over down. This is perhaps the most important ball of this over because he's under pressure. Square leg inside the circle. Down the track, connection is good, but long on. We'll keep it down to 1. Another fantastic over for the batting team. 41 after the first 3 overs. अभी तक कैप्टन गेंदबाजी को नहीं आए हैं। बहुत अच्छी गेंदबाज रहे हैं अपने समय के जेपी यादव। I think he's just trying out the options. It's also the first game of the tournament, Nitish. So you want to know what your strengths are exactly, where these bowlers can then go on and perform as the tournament goes on and on. You're right, his 4 overs will be extremely crucial if he bowls. We'll only figure out. मुक्तबीर बहुत अच्छा ओवर किया था पिछला, उन्होंने फिर से अब आए हैं गेंदबाजी के लिए। Nicely bowled. The hard length works here. It's played away with soft hands for a run. But once again from Muktavir, very disciplined in terms of his line and length so far. Although this is the over, the right-hander will be hoping he gets a boundary away. Halfway through the power play, you don't want to be the batter who hasn't got a boundary so far. Looks to pull that one away. Hasn't been able to hit it well enough for a 4. Just another run. हिरल की कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा मयंक को स्ट्राइक दिया जाए। And it's right too. सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि जिनका दिन होता है आप उन्हीं को खिलाने की कोशिश करते हो। मुक्तबीर काफी अच्छी गेंदबाजी, अभी तक सिर्फ सिंगल्स में ही डील हुआ है उनकी गेंदबाजी पे। अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं अभी। फिर से शानदार लेंथ। यहां से आप बैटर को फोर्स करते हो कि आप आगे आएं, या तो जोखिम उठाएं, या तो अगर पीछे से फोर्सफुली शॉट खेलना चाहते हैं तो फिर एज लगने का भी मौका रहता है। तो फिर और लाइन काफी सटीक, अब तक लेग स्टंप के बाहर ज्यादा कुछ नहीं दिखाया, ऑफ स्टंप के बाहर भी नहीं। ऑफ एंड मिडिल पे ज्यादा से ज्यादा गेंदबाजी करने की कोशिश है मुक्तबीर की। रन लेने का प्रयास है, रन आउट होने का खतरा, पर कोई नुकसान नहीं। एक अच्छी बात मुक्तबीर की गेंदबाजी में यह है कि जब लेफ्ट हैंडर और राइट हैंडर का कॉम्बिनेशन है, फिर भी उनकी लेंथ वेरी नहीं कर रही है, एक कांस्टेंट लेंथ में गेंदबाजी कर रहे हैं। और नीतीश, जो अच्छे बॉलर्स होते हैं वो बैटर के स्ट्रेंथ पे कम और अपने स्ट्रेंथ पे ज्यादा रहते हैं, तो ये उनकी स्ट्रेंथ है और उसी के साथ परसिस्ट कर रहे हैं।
इस बार हल्की आगे की थी गेंद, विकेट लेने की प्रयास थी यहाँ पर, अच्छी सोच। पिछली बॉल में भी एक रन आउट होने का खतरा था। मयंक का प्रयास भी वही है कि वो ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक पर रहें, क्योंकि अभी तक बड़े शॉट्स उन्होंने ही लगाए हैं। ये अच्छी कप्तानी, ओवर की आखिरी गेंद के लिए थर्ड मैन ऊपर बुलाया है और अब लॉन्ग ऑन बाउंड्री पर ड्रैग किया है, इसे कैरी नहीं की। बहुत अच्छा एफर्ट वहां पर, शायद मिस हिट था वहां पर, और बेहतरीन ओवर। इस ओवर से भी सिर्फ 3 रन, अभी तक सिर्फ 7 ही रन गए हैं उनके 2 ओवरों में। काफी अच्छी गेंदबाजी मुख्तबिर की। ट्रिपल 9 3-2 6-2 ट्रिपल 8। सोहेल 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 मसूद। So all the bowling changes have come from the pavilion end. Sohail Masood is the new bowler. Off spin then, and only comes back. That's the slope we are talking about. He's actually picked the right end, especially when you're bowling to the left-hander. You know deliveries will be coming back into the left-hander because of the slope, and then the one that grips and turns will go away. Nicely played. Very well hit indeed. There was actually a lunge forward, not a step out, just a lunge to reach to the length of the ball and then pick the right spot too. Just wide of that mid-off fielder. Pull the length back once again. I think what we have seen, Nitesh, so far, length is the key here. बिल्कुल, जब भी खींचकर लेंथ में गेंदबाजी की है। And once you pitch it up, the batters will try and go for it. That's what he wanted to do, given as buys. स्क्वायर लेग की दिशा में शॉट खेलने का प्रयास किया था, पर चूके और विकेट कीपर से भी चूक हुई और एक बाई का रन मिला। अब स्ट्राइक पर है हिरल, दाएं हाथ के बल्लेबाज, और 2 फील्डर जो बाहर हैं, एक लॉन्ग ऑन की दिशा में और एक स्क्वायर लेग की दिशा में। हिरल की कोशिश तो रहनी चाहिए कि ऑफसाइड में खेले। अक्रॉस गए तो हैं, लेकिन बहुत दूर है। फील्डर बाउंड्री पर बस बॉल को देखते हुए जा रहा ना शॉट फिर से। पहला बाउंड्री वाला शॉट हिरल का। Yes, and once a matchup came in favor, he didn't want to wait long. Cleared the front leg and went for a boom 6. What the response is. It's quicker, it's shorter. He's gone on the back foot. Denied the run, and that is the end of the over. 55 runs on the board after 5 overs. Last over of the power play coming up.
अच्छी गेंद मुख्तबिर की, काफी अच्छी गेंदबाजी की है इस एंड से मुख्तबिर ने, पर विकेट की दरकार। सेंट्रल जोन को अच्छी पार्टनरशिप लगाई है दोनों बल्लेबाजों ने। मयंक 40 रनों पर खेलते हुए। अच्छी गेंद और बीट किया फाइन लेग की दिशा में, एक और चौका। यह पहला बाउंड्री शॉट लगता हुआ मुख्तदिर की गेंद में। मयंक अभी तक सीनियर पार्टनर रहे हैं और वो रोल बहुत अच्छे तरह से निभाते हुए। विकेट की दरकार होगी सेंट्रल जोन की टीम को। एक और बड़ा शॉट, फील्डर मौजूद है, देखना होगा क्या रोक पाते कि नहीं। काउ कर्नर पर एक और चौका। शानदार बल्लेबाजी मयंक के द्वारा। सिंगल हैंडेडली वो इस पारी को आगे बढ़ाते हुए। मुख्तदिर लगातार 2 चौके उनकी गेंदबाजी पर। इससे पहले 2 अच्छे ओवर आए थे। अच्छी गेंद हवा में थी, गेंद लीडिंग एज थी और सिंगल वापसी करते हुए मुख्तदिर। पावर प्ले का यह अंतिम ओवर है। कोशिश यही कि ज्यादा से ज्यादा रन और बटोर सकें। और इंतजार यहां पर जेपी यादव कब गेंदबाजी के लिए आते हैं। स्ट्राइक पर है अब हिरल। छोटी गेंद और खेल दिया उसे मिड विकेट की दिशा में। कोई फील्डर नहीं। तीसरी बाउंड्री इस ओवर की। अच्छी गेंद, शॉट लगाया स्क्वायर लेग की दिशा में, दूसरा रन लेना चाहते, मना किया। और इसी के साथ पावर प्ले की समाप्ति। 6 ओवर 69 रन है स्कोर वेस्ट जोन। टॉस हारकर उन्हें बल्लेबाजी का न्योता मिला था और काफी अच्छी शुरुआत दी है दोनों ओपनरों ने। मयंक 49 रनों पर खेलते हुए 1 रन दूर अपने अर्धशतक से। हिरल 15 रनों पर खेलते हुए। ऑल इंडिया इंटर जोनल वेटरन क्रिकेट चैंपियनशिप 2024 का यह मैच 2 आरडीसीए रायपुर से लाइव वेस्ट जोन और सेंट्रल जोन के मध्य। सेंट्रल जोन ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया और काफी अच्छी शुरुआत वेस्ट जोन की। 6 ओवर में 69 रन बना चुके हैं बिना विकेट के नुकसान के। सोहेल मसूद फिर से अब गेंदबाजी स्ट्राइक पर हैं। हिरल पांच फील्डर सर्कल के बाहर। स्क्वायर लेग, मिड विकेट और लॉन्ग ऑन। अच्छा शॉट, लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद। स्ट्राइक पर है अब मयंक।
एक रन दूर अपने अर्धशतक से। अच्छी गेंद, सम्मान दिया उसे। अभी तक 6 चौके और 3 छक्के लगाए हैं इस पारी में मयंक ने। खेला है शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, अच्छी फील्डिंग, रन लेना चाहते थे पर मना किया हिरल ने। उस एक रन की तलाश में मयंक 49 रनों पर खेलते हुए। फिर से शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, अच्छा कट पर सीधा फील्डर पास प्लेस नहीं कर पाए उसे। अच्छी गेंद और इसी के साथ एक रन चुरा लिया और इस अर्धशतक पूरा मयंक का। 29 गेंदों पर यह अर्धशतक आया। शानदार बल्लेबाजी मयंक के द्वारा और अभी भी विकेट की तलाश में सेंट्रल जोन की टीम। स्ट्राइक पर है अब हिरल। अच्छा ओवर सोहेल का यह। अच्छा शॉट, कवर की दिशा में फील्डर मौजूद है, स्वीपर कवर, एक ही रन मिलेगा। स्कोर 72 रन 7 ओवर की समाप्ति पर बिना किसी नुकसान के। नए गेंदबाज आए हैं, राजेश कनौजिया। लगातार फील्ड में बदलाव करते हुए मिड विकेट, लॉन्ग ऑन और स्क्वायर लेग की दिशा में फील्डर बाहर लेग साइड पर। और अगर ऑफ साइड की फील्डिंग की बात की जाए तो एक लॉन्ग ऑफ और एक स्वीपर कवर। विकेट की तलाश अभी भी। अच्छी गेंद खेला उसे, शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में फील्डर मौजूद है, एक ही रन। अच्छा साथ देते हुए हिरल, ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक मयंक को देते हुए। मयंक जिन्होंने पिछले ही ओवर में अपना अर्धशतक पूरा किया, अब बिल्कुल बड़ा शॉट लगाने का प्रयास होगा। कुछ देर से रुके हुए नजर आ रहे, कुछ देर से उनका बल्ला थोड़ा शांत नजर आ रहा। बड़ा शॉट और 4 रन सीधा साइड स्क्रीन के पास। स्लोअर वन और फिर से सीधा साइड उसी दिशा में एक और चौका, लगातार 2 चौके।
एक और छोटी गेंद पर बाहरी किनारा लगकर गेंद गई थर्ड मैन के ऊपर से। एक और चौका, लगातार तीसरा चौका इस ओवर में। ये अच्छी गेंद, खींची हुई लेंथ, सम्मान दिया उसे और एक रन भी प्राप्त कर लिया। काफी अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी मयंक के द्वारा, खराब गेंद को बिल्कुल बाउंड्री के पार पहुंचाते हुए और जहां अच्छी गेंद वहां पर उसे सम्मान देते हुए सिंगल लेने का प्रयास। फिर से खींची हुई गेंद, दूसरा रन लेना चाहते हैं और बिल्कुल निश्चित तौर पर 2 रन प्राप्त हो जाएंगे। काफी अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों बल्लेबाजों के बीच और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 88 रन बिना किसी नुकसान के 8 ओवर की समाप्ति पर। सोहेल मसूद फिर से गेंदबाजी लेकर मयंक है स्ट्राइक पर। 2 ओवरों में 13 रन दिए हैं सोहेल ने। और यह पहली सफलता। मयंक काफी अच्छी बल्लेबाजी कर अब वापस लौटते हुए पवेलियन की ओर 63 रन बनाए मयंक ने। काफी अच्छी लेंथ से गेंदबाजी की है सोहेल ने और उसका उन्हें प्राइज मिला, पहली सफलता। मयंक काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, एक और बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था पर लाइन से चूके और क्लीन बोल्ड। ब्रेक में ही कर सकते हैं। हाँ, तो एक काम करते हैं, लेट्स डू इट डिफरेंटली। अभी हम 15 तक करने वाले हैं। आई विल टेक ओवर अब 10 से 10 ओवर से, तो आप जाके आराम से लंच करके आओ। अच्छा ठीक है, आई विल कंप्लीट इट बाय देन। ठीक है, देन व्हेन द सेकंड इनिंग स्टार्ट्स, देन आई कैन डू, हाँ, एंड देन ठीक है, ठीक है। हर्षद पटेल नए बल्लेबाज। अच्छी गेंद, सम्मान दिया उसे। काफी अच्छी गेंदबाजी नजर आई है सोहेल की और एकमात्र सफलता प्राप्त करने वाले गेंदबाज। फ्लाइटेड गेंद और लॉन्ग ऑन की दिशा में 1 रन।
बड़ा शॉट हवा में है गेंद और 4 रन लॉन्ग ऑन की दिशा में। अच्छी गेंद शॉर्ट थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर मौजूद, एक ही रन। और इसी के साथ सफलतापूर्वक ओवर की समाप्ति है और स्कोर 9 ओवर 95 रन, एक सफलता प्राप्त की इस ओवर में सोहेल ने। Thanks a lot, Nitish. Change in bowling then. Sunny Bhatnagar. That's an excellent length to start with. He's gone a lot straighter this time. That'll earn him another boundary. Sunny looking to get the quicker ball in. And Harshad was good enough to get the bat down. Looks like somebody who's got really long levers here. Struck firmly. Smashed, in fact. Change in line for Sunny. And Harshad opens up the offside now. That's what Sunny would be hoping, to drag him wider. Chance here for the deep fielder, taken beautifully. That has to be in a short time. The catch of the day, catch of the tournament. Amit Paul, the catcher. The ball was dipping on him. He had to make that last minute adjustment to jump forward. And Amit did so. Just get a feeling that clip of Amit's catch should and pretty much land up on his Facebook at least. Biswajit Solanki is the new batter. Just get a feeling Harshad really threw away the start he's got. I think he was timing the ball well. Just went to over attack. Good opportunity for Sunny to get the straight ball in. Confidently driven away. Biswajit is a tall batter. He took a long stride forward to get to the ball.
As it turns out, Hiral Naik, who's now faced, 16 balls, is now the glue to this innings. Biswajit denies, and he did slip once. Hiral makes it back in time. And that is the end of a successful over then. At the halfway mark, West Zone are 104 for 2. One for 20 for Sohail Masood now. He'll have the new batter on strike. This is his best chance not to just over-attack, but yeah, get a couple of dot balls if he can. Shot fine leg inside the circle. Nobody saving a single on the onside. Played off the back foot, played it nicely. They can actually push for 2. Biswajit will get back. We've seen 2 shots from him. One where he lunged forward, took a single. And now he's actually gone right back, using the crease brilliantly here. Once again, he's gone on the back foot. Hasn't got the gap though. JP covers it. Important for West Zone how Hiral bats from here on in. Goes for the full Monty. Forget about that one. Once you time it well enough, this ground is not big enough. Masood returns with a slightly quicker ball. Drag the length back. All throughout this over, Vishwajit has been looking to push back in the crease. Masood might get the stumps in play. Force the issue there. Again, that was the delivery. He could have easily gotten on the front foot, but just trying to access that area through the offside. 114 for 2 after 11. And time for a drink.
the All India Interzonal Veterans Tournament. Into the first game, first innings, right after the drinks break. That's been just chipped towards that long off fielder. Sunny Bhatnagar into his second over. I think he's looking for the arm ball here. Confidently played away. It's a fumble, that's 4. Can happen sometimes, happens to the best of us. Nicely bowled indeed. Single only of the outside half of the bat. Central have done well to pick up those 2 wickets. Now the single will come. Good proactive running from these 2. Especially Hiran, who put that initial pressure. Solanki really doing the right thing in this over. Every time he's got a ball that is pitched up, he's looked for the single option. He got the boundary by the virtue of that misfield. But the idea is to play percentage cricket. That one was there for the cut shot. Quicker ball to end the over. Good over indeed. 122 for 2 after 12. He bowled the first over, no? Javed, who bowled the first over of the innings, returns. Starts with a good ball. Should have stopped that. But it's a nice little release from that first ball in this over. He must be feeling a lot better now, having eased into the game. He must have seen how this pitch has played, how Hiral has batted so far. Quicker ball, very good option once again. 2 well thought out deliveries from Zamran Javed here. Start of a fresh spell. Now he's actually gone even more shorter, and that has allowed Hiral the time to rock back. But he'll only get 1 for that. Still a great result for Javed. Solanki blocks and blocks underneath his eyes. That is really copybook technique indeed. The contact point was so much close to the body, very much underneath his head and eyes. Once again, flat bats that one down to sweeper. Brilliant bit of comeback here from Javed. He's got this last ball to take care of. And he's managed it well enough
He would have loved to stop either one of those two deliveries that went past him. But still a great result for him. 127 for 2 after 13. Sunny Bhatnagar, who's got 1 for 17 so far, will bowl his third. JP has used up 6 bowling options so far. That is good from Solanki. Couple of overs or so, he was almost playing second fiddle to Hiral. Got something in his arc and played it straight enough. Thing is, he's got that extra bit of reach over other batters. He's got out there with a cap on, so very rarely will he look to sweep or slog sweep. Which is why anything that is pitched fuller, he'll try and go straighter than squarer. And this is a change of ball now. And Sunny will have to find a way and keep it away from the hitting arc. Go wider if he can. Dropped his hands nicely and picked that run. And that is really sensible batting now, having got the 6 of the first ball. Set batter goes 2 and takes 6 more. Previous over was a decent one. And now they have hit 2 sixes of the 3 balls in this one. He'll come diagonal right now, Sunny. Only of the pads. In fact, bat given indeed. Here comes the opportunity. Man inside the circle. Sohail tracks it down. Solanki doing the right thing, I believe. They had the advantage in this over. He wanted to get another boundary out. But it was bowled loopy. It was bowled slow. And it did beat the batter. Solanki goes for 20 then. New batter? Second name क्या है? Okay. क्या सर क्या है रचित सर ऑलराउंडर है बैटर है ऑलराउंडर Bazu won't sit down.
New batter in is Rachit Contractor. And I've been told he carries a reputation of hitting sixes. No better over to start in this one. Oh yes, he's got a clean swing of the bat. No wonder. Just down to long on. He will have the strike. 142 for 3. 6 overs to go. Played it delicately indeed. Can't beat JP though. Zamran Javed bowled a phenomenal over the previous one. Another quicker arm ball. That's the option he's gone to in the second spell. And it has worked. Very cagey in terms of his line. Excellent option indeed. Constantly the bowler was pegging away with that length, with that line, with the short fine leg up. And Hiral has just used all that pace in favor to scoop it. What that does, that makes the bowler think more. Do I now pull the length back? And if you do so, the slog sweep comes into picture. Wider line outside off. Real cat and mouse going on in this over. High quality cricket shot for a single. He's got enough time to think about a triple figure score now. Clobbered by Rachit. That's the over done. 149 for 3 after 15. Sunny's last over, he slowed it down. Rachit going for the sweep to beat the man at 45. Back in the commentary box is Nitish. Welcome back. Thank you. फिर से स्वीप और रन आउट होने का खतरा. डायरेक्ट हिट की दरकार थी. अगर डायरेक्ट हिट होती तो निश्चित तौर पर रन आउट हो जाते हिरल. Yeah, he was ball watching for a while. Then I think just should have. I think it was Rachit who was going towards the non-striker's end. Hiral on strike. He's come down the track. He's got enough. Not a bad option from Sunny, but I think the line was a lot straighter. Line could have been slightly wider. Because it was straighter, it helped Hiral
just go And- big on the leg side. It's his half century too. अर्धशतक पूरा हिरल का। Nitish, the kind of effort he's put in to get this half century, he has to think about going big now. बिल्कुल मौका है यहाँ पर ट्रिपल फिगर में जाने का, और अच्छा खेल दिखाया उन्होंने। ज्यादा से ज्यादा जो पार्टनर्स ने उन्हें स्ट्राइक दी है और उस एंड से लगातार बड़े शॉट्स लगे हैं। Rachit can't get it through. Wide. Sunny in this over has been looking to bowl a lot straighter. फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, विकेट कीपर भी चूके और एक और चौका। एम्पायर का इशारा बाई। Yeah, it's unfortunate for Sunny. He's beaten the batter now. Beaten him for the lack of pace in the flight. सनी महंगे साबित हुए, पर दो महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की है उन्होंने। बिल्कुल इस ग्राउंड पर नीतीश, अगर आप विकेट लेते रहे तो रन्स आपको पड़ते रहेंगे और उसका फर्क नहीं पड़ेगा ओवरऑल। लेट कट पर फील्डर मौजूद, एक ही रन, और इसी के साथ ओवर समाप्त। 16 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 163 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। Looked like a quicker ball from Javed, and Rachit not really sure what he wanted to do there. Off the edge, he's been living dangerously so far because of his bat speed, and that ball has just gone over the circle fielders. 4 runs. रचित का जो बैट स्विंग है उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि वो स्लॉट में आने का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही स्लॉट में गेंद मिलेगी वो बिल्कुल गेंद बाउंड्री लाइन के पार होगी। His mindset is clear, and that is the good thing here. He has to perhaps make better decisions in terms of converting those shots into big ones, but intent is 100% clear here. Pulled the length back. This is good bowling here, but Rachit has gone straighter. I think that's the best bowler can do here. He's dragged the length back slightly, but it's good batting from Rachit to get the gap. सबसे सेफ जगह में यहाँ शॉट लगाया। And that's what making better decisions is, just picking the right spots. Nah, I think that is of the keeper. अपील का प्रयास था पर नकारा एम्पायर ने। कीपर के पैड से लगकर गेंद स्टंप पर लगी। This time wanted to launch it straighter. Rachit. Nothing has been slow and loopy from Javed. He knows what Rachit is up to. जावेद ने यहाँ गेंद थोड़ा पीछे से भी फेंकी थी, आपने अगर नोटिस किया होगा। बिल्कुल वेरिएशन लाने का प्रयास और छकाने का प्रयास बल्लेबाजों को।
That's great running indeed. Ran the first one hard and then came back for the second. और इसी के साथ 17 ओवर पूरे हुए और 174 रन है स्कोर, 3 विकेट के नुकसान पर। 3 ओवर आने शेष हैं। देखना होगा कि वेस्ट जोन की टीम इन 3 ओवरों में कितना स्कोर को आगे बढ़ा पाती है। जमे हुए बल्लेबाज मौजूद हैं, हिरल और वही रचित बड़े शॉट लगाने में सक्षम। एंकर का रोल निभाते हुए हिरल अभी तक जमे हुए सलामी बल्लेबाज के तौर पर 53 रनों पर खेलते हुए। राजेश कनौजिया आए हैं फिर से दूर छोर से। पहले ओवर में 16 रन लगे थे इनके। स्ट्राइक पर है रचित, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, वो स्लॉट ढूंढते हुए जहां से बड़े शॉट में तब्दील कर सकें। लंबा रनअप रचित का। छोटी गेंद पुल करना चाहते थे पर कोई इशारा नहीं एम्पायर का। अंतिम 17 गेंदें आनी शेष है। निश्चित तौर पर 45 से 50 रन और जोड़ने का प्रयास होगा वेस्ट जोन का। हेलीकॉप्टर शॉट ऐसा लगा देखकर, एक ही रन लॉन्ग ऑफ की दिशा में। हिरल है स्ट्राइक पर, 2 चौके और 4 छक्के लगा चुके हैं अपनी इस पारी में। फुल टॉस गेंद खेला है इसे, कवर में फील्डर मौजूद, एक ही रन। अभी तक अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, सिर्फ 2 सिंगल्स ही दिए हैं। स्ट्राइक पर है रचित, फिर से एक बड़ा शॉट लगाने का प्रयास होगा रचित का। स्लोअर 1, मिड विकेट और फील्डर मौजूद है, देखना होगा क्या दूसरा रन लेंगे। अच्छी फील्डिंग, एक ही रन मिलेगा। काफी अच्छी फील्डिंग और उतना ही अच्छा थ्रो अमृतपाल के द्वारा। अच्छी गेंदबाजी, हिरल है स्ट्राइक पर। फिर से अच्छी गेंद, बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था, गेंद कवर की दिशा में। काफी अच्छा ओवर घटता हुआ है यह सेंट्रल जोन के लिए। रचित है स्ट्राइक पर, देखना होगा क्या इस ओवर को अच्छे से फिनिश कर पाते हैं, क्या बड़ा शॉट लगा पाते हैं। बड़ा शॉट और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन। और इसी के साथ 18 ओवर पूरे हुए और स्कोर 182 रन, 3 विकेट के नुकसान पर। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो, जय हो। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। जय हो।
मुक्तदीर की गेंद हवा में है, गेंद देखना होगा लॉन्ग ऑफ का फील्डर, एक ही रन मिलेगा, दूसरा रन लेना चाहते हैं, मना किया और रन आउट होने का खतरा बिल्कुल, पर दोनों बल्लेबाजों के बीच कंफ्यूजन, और मुक्तदीर भी अगर थोड़े और अवेयर होते तो निश्चित तौर पर एक यह रन आउट। इससे पहले अच्छी गेंदबाजी की थी मुक्तदीर ने अपने पहले स्पेल पर, दूर छोर से थे, अब इस स्पेल में पवेलियन छोर से आए हैं। फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, गैप में है गेंद, फील्डर मौजूद है मिड विकेट की दिशा में, एक ही रन। अंतिम ओवर है पर बड़ा शॉट अभी भी दरकार है, बड़े शॉट्स की, और अच्छी गेंदबाजी करते हुए सेंट्रल जोन के गेंदबाज। स्लोअर वन, गेंद हवा में है, कवर का फील्डर मौजूद, और एक अच्छा कैच, अच्छा जज किया हुआ कैच सोहेल के द्वारा, पहले ही कॉल कर दिया था। और इसी के साथ हिरल एक अच्छी पारी खेलकर वापस लौटते हुए 56 रनों का योगदान दिया, शानदार। जिस तरह की शुरुआत हुई थी वेस्ट जोन की, उस स्तर से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा खींचा है मैच को अपनी ओर सेंट्रल जोन ने। अंतिम ओवरों में बड़े शॉट की दरकार है, पर अभी अच्छी छोटी गेंद खेला उसे मिड विकेट की दिशा में, फील्डर मौजूद, एक ही रन। बड़े शॉट्स की दरकार है पर सिंगल डबल पर ही रन स्कोर होते हुए अच्छी गेंदबाजी मुक्तदीर की। स्ट्राइक पर है अब रचित, बड़े शॉट की दरकार। फुलर लेंथ गेंद, गेंद अंदरूनी किनारा लगकर गेंद गई 4 रन, निश्चित तौर पर बल्ले से हरन। आगे आए थे पर फुलर लेंथ गेंद, फिर से स्लोअर वन, लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक ही रन। अच्छा ओवर मुक्तदीर का, एक सफलता प्राप्त की इस ओवर में, और एक बाउंड्री जो इनसाइड एज लगकर लगी तो काफी अच्छा ओवर कहा जाएगा। और 19 ओवर की समाप्ति, स्कोर 190 रन, 4 विकेट के नुकसान पर अंतिम ओवर आना शेष। रचित स्ट्राइक पर अभी तक 4 चौके लगा चुके हैं। राजेश कनौजी आए हैं अब अपना तीसरा ओवर लेकर। मुक्तदीर जिन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 29 रन दिए, इस मैच की परिस्थितियों के हिसाब से काफी शानदार गेंदबाजी और एक सफलता भी प्राप्त की। राजेश अंतिम ओवर लेकर पारी का, स्ट्राइक पर है रचित, देखना होगा क्या पहली गेंद में बड़ा शॉट लगा पाते हैं।
फिर से हेलीकॉप्टर शॉट, गेंद हवा में है और एक ही रन मिलेगा। अच्छी गेंदबाजी, ब्लॉक होल में थी यह गेंद। अब कप्तान है स्ट्राइक पर विपुल पटेल। बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से, एक और 6। पारी में तीसरी दफा है जब यह गेंद उस मैरिज लॉन में जाकर गिरी और गेंद का इंतजार होता हुआ। स्कोर 197 रन है। अंतिम ओवर प्रगति पर काफी अच्छा स्विंग था विपुल के द्वारा इस बॉल पर। फिर भी यह जरूर कहना होगा कि काफी थिंग्स पुल बैक की है सेंट्रल जोन की टीम ने। और फिर से अब गेंद, नई गेंद मैदान पर जाती हुई। चार गेंदें आनी शेष हैं अंतिम ओवर में। विपुल है स्ट्राइक पर, अच्छा 6 लगाया था और शायद वह गेंद भी लगातार प्रयास होता हुआ उस गेंद को वापस लाने का खेल में, पर शायद कोई वहां मौजूद नहीं। राजेश फिर से, और गेंद वापस अब मैदान पर। फिर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन की दिशा में। एक ही रन, दूसरा रन लेना चाहते हैं रचित, पर मना किया विपुल ने। रचित देखना होगा क्या बड़ा शॉट लगा पाते हैं। 4 चौके लगा चुके हैं अपनी इस पारी पर। छक्के की दरकार अंतिम ओवर प्रगति पर। शानदार फील्डिंग अपने फॉलो थ्रू में, बहुत बढ़िया फुटवर्क। अच्छी गेंदबाजी राजेश के द्वारा इस ओवर में, अंतिम ओवर। फिर से रचित सामना करेंगे राजेश का। फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑन की दिशा में, फील्डर मौजूद, क्या 2 रन हो पाएंगे, पर एक ही रन मिलेगा। थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ लिंपिंग कर रहे हैं रचित। अंतिम गेंद अब आखिरी ओवर की और 199 है स्कोर। बड़ा शॉट और 6 रन, और इसी के साथ 20 ओवर की समाप्ति पर 205 रन वेस्ट जोन का स्कोर। 4 विकेट के नुकसान पर अंतिम गेंद पर शानदार छक्का लगाकर इस पारी को फिनिश किया।
टॉस जीता था सेंट्रल जोन ने, पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया था। इसके जवाब में वेस्ट जोन की टीम ने शानदार शुरुआत की थी पावर प्ले के दौरान। ओपनर बल्लेबाज मयंक ने शानदार 63 रन बनाए। उसके बाद हिरल नायक जो एंकर का रोल जिन्होंने प्ले किया और 56 रनों की शानदार पारी खेली। और अंत में रचित ने 28 रन और अंतिम ओवर में विपुल ने 2 शानदार सिक्स लगाकर इस पारी को फिनिश किया और 205 रन स्कोर, 4 विकेट के नुकसान पर 20 ओवर की समाप्ति पर 206 रनों का टारगेट अब सेंट्रल जोन को। कुछ करिए नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई बंद रहने देना, बंद रहने देना।
चैंपियनशिप 2024 पहला दिन मैच 2 आरडीसीए ग्राउंड रायपुर से लाइव। सेंट्रल जोन वर्सेस वेस्ट जोन। सेंट्रल जोन ने टॉस जीतकर पहले क्षेत्र रक्षण का फैसला किया और वेस्ट जोन ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रनों का स्कोर खड़ा किया 4 विकेट के नुकसान पर। मेरे साथ है बाबा, स्वागत है आपका बाबा जी। Thanks a lot, Nitish. बाबा ये बताएंगे कि जो शुरुआत मिली थी वेस्ट जोन को, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या थोड़ा स्कोर कम हो गया और अच्छा प्रयास किया सेंट्रल जोन ने? Absolutely excellent effort from Central Zone, of course. But when you look at that scoreboard right now, it's not as if it is straightforward that they'll get there. They still will have to bat well. They'll have to get the bare minimum, which is 10 runs per over, what we spoke about. And JP Yadav, who didn't bowl, perhaps will play a massive part with the bat. I think it looks like he's the one who's walked out with his pads on first up. बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद सलामी बल्लेबाज के तौर पर जेपी यादव यार है। मुझे एक पारी याद आती है जेपी यादव जी की, जो उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में खेली थी। इरफान पठान के साथ एक पार्टनरशिप लगाई थी और 44 रन पर शायद 8 विकेट गिर गए थे भारत के। उसके बाद उन्होंने इरफान पठान के साथ शत की साझेदारी निभाकर मैच को क्लोज ले गए थे। हालांकि भारत वह मैच नहीं जीत पाई थी, पर बहुत अच्छा प्रयास हुआ था उस दौरान। No, he's rubbed shoulders with the best in the world. He's done excellent for his zone as well. He's won the Dilip Trophy too. He's done it at all levels. So, really, I mean, people who really look at that particular era, he was one of the players who can give you both options with the ball, with the bat. And so, a real utility player. When white ball cricket actually almost started finding its roots in India, I believe he was one of the most sought after talents. So he must have seen cricket evolve into this modern day, I will smash you every ball kind of a game. So he's seen that evolve. I'm really excited to watch him bat after ages. बिल्कुल, और स्ट्राइक पर ही हैं और कोशिश यही होगी कि जो पावर प्ले है उसमें ज्यादा से ज्यादा रन स्कोर किए जाएं। Absolutely, and he will know for a fact. He must have seen that first innings, and he will know if you play good cricket shots, you'll get runs here. You can just time the ball, you'll still get fours. And every now and then, if a loose ball comes, you try and hit it out of the park. So, really, for batters on this ground, Nitish, you got to keep it really simple. Simpler you keep, you get the best results. Wide-ish delivery to start. Nicely glanced away, no run though. सदी हुई शुरुआत गेंदबाज का अगर आप एक्शन देखें तो मुझे पाकिस्तान के जो गेंदबाज थे राणा नवेद, उनकी याद आती है। कुछ उस तरह का एक्शन नजर आता हुआ मुझे। Edged and gone. JP falls cheaply. Hint of outswing there. He wanted to drive it on the up outside edge. And I think that is Solanki who's grabbed hold to that one. Pressure catch and very well done. काफी अच्छी कप्तानी भी कही जाएगी। स्लिप से शुरुआत की उन्होंने और बिल्कुल एक रेगुलेशन एज और शानदार कैच स्लिप के फील्डर के द्वारा।
अच्छी शुरुआत वेस्ट जोन की। स्टार बल्लेबाज को पहले ओवर में उनका विकेट हासिल किया। देवल गेंदबाज, अब नए बल्लेबाज आए हैं। They will, with that wicket, wanting to start it from way outside leg stump. That'll be another wide. You mentioned Rana Naveed. Yes, only in terms of the load up, how they were loads up, that's very similar to Rana. Other than that, he's got a very mellow run up right now, at least. I believe he must be yards quicker moving on. Oh, हवा that's में in the air too. बिल्कुल एक और झटका हो सकता था। अच्छी गेंदबाजी इस ओवर में, शानदार शुरुआत कही जानी चाहिए वेस्ट जोन के द्वारा। एक बड़ा विकेट हासिल किया अपने पहले ओवर में। Just wide of mid off for a run. This is a brilliant start with the ball for West Zone. A wicket in the first over. You've seen Deval finding some swing early on. सिंगल चुराया मिड विकेट की दिशा से। अच्छा ओवर, अभी तक कोई भी बाउंड्री नहीं। That struck firmly. Will clear the infield convincingly indeed. A boundary comes right at the end of that first over. Eventful one indeed. 10 for 1. अच्छी शुरुआत वेस्ट जोन की, पहले ओवर में ही सफलता प्राप्त की। हालांकि अंतिम गेंद पर बाउंड्री लगी, पर फिर भी यह कहना होगा कि बहुत अच्छी शुरुआत, क्योंकि जो बड़े प्लेयर थे जो मैच को अपने तरफ मोड़ सकते थे, पहले ओवर में उनका विकेट हासिल किया। What that also does, it prepares the stage for somebody else to come and own it. Hiral, who batted really well in that first innings, scored 56. Comes out to bowl his first over from the pavilion end. Only of the inside half of the bat. अच्छी कॉल, नॉन स्ट्राइक बल्लेबाज के द्वारा रन लेना चाहते थे परवेज, पर मना किया। हिरल बल्लेबाजी में भी सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए थे और अब दूसरा ओवर लेकर आए हैं अपनी टीम के लिए।
Square leg fielder now, right next to the umpire. High quality shot indeed. One bounce. Opens the offside very early in the innings. I think that is Pervez who gets that boundary. ऑफ साइड में सिर्फ एक ही फील्डर है जो सर्कल के बाहर है थर्ड मैन पर, बाकी पूरा स्पेस खाली। अगर बिल्कुल चार्ज करेंगे, अगर हवा में शॉट लगाएंगे फील्डर के ऊपर से, तो निश्चित तौर पर आउटफील्ड भी बहुत तेज है। I think as a bowler, you got to invite him to keep doing that. Ask him to keep going in that region. That brings the slip, the gully, all of them in play. They push the mid off to long off now. But changed the line, went a lot straighter. That's a very dangerous line with the square leg and the fine leg up in the circle. Had he got any bat onto that, that would have flown away. So he's gone back to the plan with which he started the over. And that's fair. Once again, lot straighter in terms of line. Two more added to the total. If only Hiran can just control the line here. I think he's bowling with decent pace. That's the ball. Right on the money. अच्छी गेंदबाजी हिरल की। बिल्कुल जैसे बाबा ने बताया कि लाइन बस थोड़ा सुधारने की आवश्यकता, लेंथ बहुत अच्छी फेंक रहे हैं। Cover fielder only at the edge of the circle, so single. ये सरफराज दूसरा बल्लेबाज कौन है परवेज के अलावा? नहीं यार, जेपी तो आउट हो गया ना। जेपी यादव यार, पहला ही बॉल एज लगा ना उनको, स्ट्राइक नॉन स्ट्राइक में जेपी यादव नहीं है भाई, उनका हो गया, आउट हो गए, आउट हो गए ना। जो आउट है वो जेपी यादव थे। हाँ तो ये अमित फिर वो सुधर जाएगा कि नहीं सुधरेगा? वो बाद में मैच के बाद अच्छा, अब नहीं होगा। Flicks this one nicely. Gentle pickup shot that is. And he's got 4 for that. 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 22 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। सेंट्रल जोन की टीम कोशिश करती हुई, जो पहला झटका लगा था उससे उभरने की। 206 रनों का लक्ष्य है और कोशिश यही कि पावर प्ले में ज्यादा से ज्यादा रन बटोरे जाएं, एक डिसेंट स्कोर तक पहुंचा जाए पावर प्ले में और विकेट भी ज्यादा ना खोएं। Deval Patel into his second now. That solitary slip fielder has disappeared. They've gone for a short third. In fact, if you think about it,
So actually two kinds of short third now. Excellent line once again. Low percentage shot indeed. When you're trying to hit against the swing. Soft dismissal indeed. What's the hurry though? They've lost a big wicket. They've got the runs. Wanted to just play it with an angled bat and got it straight to the fielder. दूसरी सफलता देवल को. अच्छी गेंदबाजी और अच्छी शुरुआत वेस्ट जोन की. दूसरी सफलता प्राप्त की और अब सेंट्रल जोन को यहां से एक पार्टनरशिप की दरकार, क्योंकि 20 ओवर अभी भी स्टिल लॉन्ग वे टू गो. एक अच्छी पार्टनरशिप अगर लगती है तो बिल्कुल मैच में वापस आ सकते हैं. पिच अच्छी है, स्मॉल बाउंड्री है. Square drive to start for Sami Khan. Looks to be another powerful player, is Sami. बाबाशिष बट यहाँ पे पार्टनरशिप की दरकार है और Absolutely. I would have given Deval a slip here. Sami looks like somebody who plays with hard hands, outside edge, very much in play. हवा में गेंद पर गैप में और 4 रन. A fluent cricket shot indeed. But if that's what he's trying to do as a bowler, you give yourself the best chance. If the edge comes, there's somebody there. बिल्कुल जब नए बल्लेबाज हैं और अच्छी बॉल बाहर निकल रही है, बाहर जा रही है, तो एक स्लिप होना बिल्कुल निहायत ही आवश्यक. There comes the edge. There was nobody there. Only if they had somebody catching, Deval could have had another one. Shami would take it. Second boundary for him. It's Baba's call. बिल्कुल स्लिप रखे बाबाशिष ने कहा और बिल्कुल वहीं से गेंद निकल गई और अगर स्लिप होती तो एक और झटका हो सकता था सेंट्रल जोन के लिए. To be very honest, Nitish, from our angle, I don't know how fine or thicker that edge was, but it looked like it went finer because they've got two short thirds and it evaded both. Nicely played away. There comes the run. For 2 after 3. 31 for 2 after 3 overs. They're okay in terms of scoring here because of the flurry of boundaries that they've got. That run rate is fine.
वेस्ट जोन का यही प्रयास है कि आप रन को तो रोकना आसान नहीं है, पर विकेट्स अगर लेते रहे तो बिल्कुल सामने वाली टीम पर प्रेशर एक रहेगा, और वही करते हुए वेस्ट जोन की टीम। Hiral into his second over. And a solid block from Sami. अगर फील्डिंग को देखा जाए तो एक स्क्वायर लेग पर फील्डर है और एक लॉन्ग ऑन पर, और बाकी ऑफ साइड पूरा ब्लॉक है। 6 खिलाड़ी सर्कल के अंदर ऑफ साइड में, बैक ऑफ साइड फील्ड। Although there's enough gap there, if Shami wants to time it. Lunges forward. Especially square on the offside. So Hiral must not give Shami any kind of width here. Ask him to hit down the ground or on the onside. So he can't go wider. Clipped away. What a pickup shot that is. Very easy, but it went a long way. काफी जबरदस्त पावर जनरेट किया, और टाइमिंग इस शॉट में देखा जाए तो Wrist work was fantastic. I mean, once he picked the length, it's just a rubber-like wrist going through the ball. Didn't want to muscle the ball. For the first time, he's gone wider and way outside the marker, that is. बाबाशीष जी एक शमी हैं जो भारत के लिए करते हैं जबरदस्त काम गेंदबाजी से। अब यही काम अब बल्लेबाजी से यहाँ सेंट्रल जोन के लिए शमी को करना होगा। अच्छी शुरुआत की है उन्होंने अपनी पारी की। Even that Shami hits a long ball. Even he hits massive sixes. That is slightly unnecessary in this over. When you've got the boundary away, he wanted to make a shot by going over mid-off there. Doesn't have to. As what Mayank showed, Hiral showed, if you spend time out there, this is easy enough for a batter. When you try and craft something out of thin air, you give a chance to the bowlers, to the fielders. Down the track, wanted to slog it on the onside. I think that's the way he's going to bat. बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि ज़्यादा वो इंतजार नहीं करना चाहते, और कोशिश यही कि बड़ा शॉट्स लगाते रहें लगातार और गेंदबाज को प्रेशर में रखा जाए। Loose shot once again. And the over ends. 38 for 2 after 4. That'll be 4. Deval starts his third over with the line very much outside, leg stump, and it's easy pickings for the batter there.
Oh, that's been lifted away. Back-to-back boundaries then. Just what the Central would have been hoping for. Amit looks to be in good touch now. Deval will have to go for what has worked for him. That is too short. He knows it. Amit knew 4 runs written all over that one. Just couldn't get the gap or the timing. Could be a fact that Deval is a little bit tired right now. He's bowled 2 overs. He's bowled full tilt. In this over so far, just looks short on energy. Better ball and an equally better shot. All the way for 6. Over covers that too. I don't think that's a bad ball there, Nitish. He's done everything he can to get the ball up and move the ball away. It's just a fantastic shot from Amit. अमित की पारी की सबसे खास बात रही है बाबाशीष की प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स खेले उन्होंने अभी तक. एक भी बॉल को उन्होंने स्लॉग नहीं किया है या ऐसा कोई असमंजस में नजर नहीं आए हैं. जहां अच्छी गेंद गिरी उसे बराबर सम्मान दिया और जहां पर उन्हें लगा कि गेंद स्लॉट में है तो उन्हें बाउंड्री पर पहुंचाया है. Now works it away on the onside. Deval for this last ball will be searching for a wicket. He's bowling this extra over because he can give his captain one more wicket inside the power play. Change in field. Sweeper from the offside comes inside the circle. Long on, long off back. Massive hit. That's into another postcode. आई थिंक आज के दिन का सबसे बड़ा छक्का लगाया शमी ने. और इसी के साथ 5 ओवर की समाप्ति. स्कोर 59 रन 2 विकेट के नुकसान पर. अच्छा ओवर यह सेंट्रल जोन के लिए. 21 रन आए इस ओवर से. अमित की अगर बात करें बल्लेबाजी की तो उनका रोल यह वही रहेगा जो हीरल ने रोल प्ले किया था वेस्ट जोन की पारी में. Absolutely. It looks like the tall, imposing figure of Solanki will begin his spell, his first over. First signs of spin then in the second innings. He's very particular about where that short third fielder is. Long on deep mid wicket. Played away with a lot of ease there by Amit. काफी सेंसिबल बल्लेबाजी अमित की. और अगर अमित का आप स्कोर कार्ड देखें तो 26 रन बनाए हैं सिर्फ 10 गेंदों में और प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स लगाए उन्होंने. Now this is good from Solanki. He sent mid off to long off, asking Shami to go over mid on. Dragged it shorter. Maybe he's got some bat onto that. Nothing, in fact. 5 wides it will be.
वाइड बॉल और बाई का चौका दिशा से भटके थे विश्वजीत। अपील एम्पायर के पर नकारा एम्पायर ने। स्वीप करना चाहते थे। पैक ऑफ साइड की फील्ड और एक न्योता बल्लेबाज को कि वो या तो मिड ऑन के ऊपर से खेलें या स्क्वायर लेग के ऊपर से खेलें। अच्छी गेंद फॉलो थ्रू में आए थे। बड़ा शॉट लगाने का प्रयास था पर रोका अपने आप को और अब फील्ड में बदलाव। लॉन्ग ऑन लिया है और मिड ऑफ अब ऊपर सर्कल पर। फिर से चूके विकेट कीपर। देखना होगा एम्पायर का इशारा। बल्ले से आया यह शॉट 4 रन। काफी अच्छा ओवर। फिर से एक बार सेंट्रल जोन के लिए दूसरा चौका आया इस ओवर में। एक चौका बाइक आया था और एक अब बल्ले से लगकर गेंद गई फाइन लेग की ओर। Lot of height and a lot of distance indeed. Shami continues the power hitting striking that we have seen so far. Sri Lanka has to look to go quicker into the surface. Quicker into the surface it is, and it works. And that's the over done. 76 for 2. Power play done and dusted. एंड इट्स समी शो। 32 रन 16 गेंदों पर 3 छक्के और 3 चौके। और वेस्ट जोन की टीम बातचीत करते हुए आपस में कुछ रणनीतिक बातचीत और एक अच्छी वापसी सेंट्रल जोन की टीम के द्वारा। Sandeep Patel is the new bowler, another left arm spinner. He'll have more protection on the boundary. It doesn't matter though. If Shami is hitting it that big, fielders don't matter. Nicely played away. That wasn't short enough. Shami actually played this on the move and not entirely from deep in the crease. Fast hands from him. You can see what Sandeep is trying to do. He's trying to keep the length away
from Sami's arc. In the air, dropped. Bowler did the right thing. The opportunity was there. Goes down as a really, really easy catch that has been dropped. And it's captain of the team. They're still very much in the game though. Had that catch been taken, they were definitely in the driver's seat. Excellent stop. You see, something like that almost lets them forget that drop catch straight away. Good energy on the field, backing each other up. And that almost got another fall shot out. This is what pressure bowling does. Even if you're not getting wickets, you're almost about to get one. Sandeep stops that one too. 4 dot balls now. Just after the power play, the 7th over is so crucial when the batters are just trying to figure out 3-4 singles every over. Look what Sandeep has done here. Only 1 run so far. That just goes wide of that fielder. Good shot from Amit. And eventually the over ends with a boundary then. 81 for 2 after 7. काफी अच्छा ओवर संदीप का और लगातार प्रेशर में रखा बल्लेबाजों को और एक मौका भी था जिसे गंवाया शमी जो बहुत अच्छा खेलते हुए आसान सा कैच छोड़ा कवर की दिशा में विश्वजीत फिर से अब पवेलियन छोर से And Solanki will continue. He's got a long on, deep mid wicket, deep square leg. 3 deep fielders on the boundary against Sami. He's got the long off back and a sweeper back. It's a good ball, but Shami has hit it wider of that fielder. What placement that is. Once he went deep in the crease, this is perfect placement from Shami. So he's not only got power, he's got placement. Now partnership is building. 63 रन जोड़ चुके हैं दोनों बल्लेबाज और वापस लाया है सेंट्रल जोन को इस मैच में. And Shami has hit that shot of a very good ball. Now just works it away on the onside. This will go all the way to given of the bat as well. I think this is brilliant batting indeed. He almost threatens you that he'll hit everything out of the ground of the front foot. So then as a bowler, when you pull the length back, he's ready to then work it off the back foot. Work that shot squarer through the offside, now finer on the onside. Now very much on the move, but can't find the placement right. Still 2 boundaries to start the over, that's good enough. फिर से गैप में गेंद रन आउट होने का खतरा. एक ही रन प्राप्त हुआ.
दूसरा रन लेने के प्रयास में फिसले थे शमी और मना किया फिर अमित ने. I can remember only one batter. I think Hiral played the scoop. No other batter has tried that. The length Solanki is bowling, that is perfect to get underneath and scoop it away. Slightly fuller this time. I think there's a ball to go in this over. 9 runs have come off it. Soft hands, but they decide not to take the run. Overdone. $90 for 2. Babashish current. अच्छा शॉट, तेज शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में, एक ही रन. बाबाशीष, बात करते हैं अगर मैच की पोजीशन की. करंट रन रेट लगभग 11.25 का रन रेट है और रिक्वायर रन रेट है 9.75. कहाँ कैसे देखते हैं इस मैच को आप? With these two batting normally, definitely batting side has the chance to chase this total down. वेस्ट जोन को चाहिए कि वो यहां से इस पार्टनरशिप को ब्रेक करें. Absolutely. Get rid of Shami. He's actually hurting you the most. That's 4. No stopping that. He is so powerful even off the back foot. That is his 6th 4 to go with the 3 sixes that we have seen. Batting with a strike rate of 195. He's hitting these shots of really good deliveries. Once again, powers it down the ground. Moves to 48 with that run. एक और शॉट और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार 6. Can't really blame the bowler here because Amit is batting slightly more conventionally. Bowler Sandeep thought this is my opportunity to pitch one up, but even he is set. So he's nicely angled the bat, went with the spin. This is high quality partnership batting indeed. Better length. And that's been played towards the sweeper fielder. Another chunky over indeed in this run chase. Right now they look well in course. On course. There is 104 for 2 after 9 overs. Central zone. more they bat, they'll win. 20 minutes means 4 over. Yeah. 4 overs if these two bat, the game done. नीतीश थोड़ा ब्रेक ले लो, मैं कर लेता हूँ लाइक 13 overs, फिर 13 to 15 कर लेंगे एंड फ्रॉम 15 यू कैन फिनिश.
नेम सर बॉलर नेम यार एक नाम बोलना RG starts a new spell and gets the Yorker in straight away. Jignesh. What he's trying to do is once again go for that Yorker. Go really full. I think they're going to death bowling against Sami. That's not a bad thing. But Shami is good enough to just get underneath that. It's a cute 6. That's all that matters. Magnificent half century this is from Shami here. 4 towering 6s, 6 4s. Central Zone was in trouble. They lost JP very early. And after that, him along with Amit has got them right back into the driver's seat here. Six more. When you're trying to nail the Yorker, if you miss it even by a fraction, it's just too easy for the batter. Amit doing the right thing, just letting Shami know there's too many overs to bat. Just telling him we are well on course. Can we just stay out there? Hat-trick of 6s. All the 3 deliveries, they were really full ball. And that is too easy for Shami right now. If the length is pulled back, it could well be 4 in a row. Looped up, 4 in a row it is. This is quite remarkable indeed. With this over, what they have now guaranteed that the required run rate will never be 10 runs per over or more. It'll always be less than that. Only 77 needed now, which means unless they go really badly, that required run rate will always be in control. Finally, the ball is back on the ground. We have just seen Shami hit 4 6s on the trot. The first ball of the over was a single. And after that, Shami has now hit 4 on the trot, 4 on the bounce. Change of angle. It will be 5 on the bounce. It's gone on to the roof of the Indo Cricket Academy. And out here we have been treated. There's no better way to wish everyone a Valentine's Day.
with 8 sixes so far. 6 fours, a strike rate of 260. For Shami batting on 78 of 30. Central Zone only needs 71 more from the last 10. Much deserved brings break for them. Ten overs to go. And looks pretty straightforward from here on in, this run chase. Unless, of course, West Zone can pull a couple of wickets and pull things back. Sami batting on 78 of 30. Amit batting on 39 from 20. Both look set. New bowler? Aftab is the new bowler. That's a wide. He'll take a couple of deliveries to get warmed up. But there is hardly any time. Another 15-20 run over and this game is over. Chance for that fielder. Looked like that was Deval. Deval, in fact. Right, this is what box office entertainment is. Strike rate of 260. For Central, who won a high scoring game to get here. Shami down the track. He's only has had more air miles in the last half an hour or so. That's the 9-6 that he's hit. Yes, in fact, he got 5 on the bounce in the previous over. And this is the first ball that he's faced in this one. So, technically, he's hit 6 sixes in 6 balls. I think that pavilion is very used to Sami doing this. Now Deval. It's hanging
And it's taken. Finally, the wicket falls, but not before. Shami has got a real dent in that total of 205 that West Zone got. Shami himself gets out after scoring 84. With 63 more needed, maybe, just maybe, this is West Zone's another window of opportunity. New batter in, joining Amit, in fact, is Satish. Satish has got a very unique setup in his stance. He's very low in the stance. So the center of gravity is quite low indeed. I think he's going to play spin really well because he'll pick length better. He'll know anything that is above his eye line is actually a fuller ball. Anything below the eye line is shorter. Not trying to hit it too hard. Very important that once again there is another little partnership here. Satish only plays that with the outside edge. Knowingly indeed. 145 for 3. That is Mayank's first ball. That's been tapped away through the offside. Again, soft hands, good batting this. This is what I was talking about. I think Satish's game against spin will be exceptional. Just in terms of where he positions himself.
He's somebody who's powered away. Once you get it underneath and you're going straight, giving yourself the best possible chance to get a boundary. We've already seen a couple of, in fact, 3 half centuries in this game. Amit wanted to be the 4th one with that particular ball. Only the inside half of the bat, just a run. He moves on to 47 now. Satish is somebody who will play the sweeps really well too. Cuts that one. That's in the gap as well. They will push for the second and get it quite easily indeed. This time that's straight to the sweeper. Batting normally now. And that's all that matters for them. 155 for 3. They need 51 more. Half to continue. Well controlled shot once again from Satish. .25 ball, 47 for Amit so far. Glanced away. They will push for 2 more. Lovely bit of batting awareness this. They know the time to power hit is gone and they have done it for a while. Now it's just about rotating the strike and staying focused in this chase. Chance for the sweeper fielder. He fumbles. It was a difficult take, of course. And that is 50 for Amit. 4th batter today to get to the mark. All 4 of them have found different ways of scoring runs. We saw Mayank and Hiral was working through their technique. And now Amit showing a lot of temperament. That doesn't carry to the cover fielder either. West Zone will know. A wicket here, a wicket there. Once again, it's back to Evans and Stevens. Out of the ground. Fuller ball from Bapu and dealt with. That's the 3rd 6 for Amit. Only a run more. Only 36 needed from the last 42 balls then.
I've just been informed that Amit Pal actually played Ranji Trophy cricket for Chhattisgarh himself, and then very much has looked class apart so far. Captain now into the bowling attack. Just trying to create some magic out there. And you got to keep believing. We have seen T20 run chases go soar very late. So as a fielding unit, just stay alert. If an opportunity comes, grab it. Right now, these two are doing it masterfully though. There is no pressure. They're not taking any pressure either. Soft hands, nudging, pushing around, rotating the strike, talking to each other, adding good energy into the batting crease, both of them. Satish drives and fluently indeed. Beg your pardon, that was Amit who got that single away. Now Satish on strike. Quite over so far. And quite over it will be. Good one from the captain. .33 needed from 36 now. छह ओवर 33 रनों की जरूरत. विकेट्स चाहिए होंगे अगर कुछ वापसी करनी है वेस्ट जोन को इस मैच में. तो अच्छा सिंगल चुराया. काफी सेंसिबल बल्लेबाजी करते हुए सतीश और अमित एंकर रोल प्ले करते हुए सलामी बल्लेबाज के तौर पर. विश्वजीत 26 रन दे चुके हैं. इससे पहले 2 ओवरों में विकेट की दरकार होगी अगर इस मैच में कुछ वापसी करनी हो तो. अच्छी गेंद पुश किया उसे, कोई रन नहीं. काफी सेंसिबल सूझबूझ भरी बल्लेबाजी अमित के द्वारा. स्लोअर बॉल और खेला उसे मिड विकेट के क्षेत्र में. एक ही रन. मैजिक चमत्कार की जरूरत वेस्ट जोन को. अच्छा कट पर कोई रन नहीं. सीधा फील्डर के हाथों में. आगे बढ़कर मारा हुआ शॉट. फील्डर मौजूद लॉन्ग ऑन पर. एक ही रन. पहला एग्रेसिव शॉट देखने को मिला सतीश के बल्ले से. हालांकि एक ही रन प्राप्त हुआ पर अच्छी गेंद, खींची हुई गेंद. पुश किया उसे कवर की दिशा में. फील्डर मौजूद और इसी के साथ ओवर की समाप्ति. 30 गेंदों पर 30 रनों की आवश्यकता अब.
विपुल फिर से गेंदबाजी लेकर. Crucial over this. Last 2 overs we have seen the scoring rate haven't gone up, which is why Satish wanted to take the attack on for the first ball. And Vipul is a kind of a bowler, if you go after him, that's when he's in the game. Launched. They needed a boundary, it has come. That has thudded into that rooftop of Indo Cricket Academy once again. Now, जो प्रेशर एक छोटा सा बिल्ड हुआ था, उस प्रेशर को रिलीज शॉट रिलीज किया यहाँ पर. Yes, that's what the set batter is there for, to take calculative risks. And now he can go back to nurdling it around. Only 22 needed now. On this ground, defending is very difficult indeed. And you'll have to give the credit to how West Zone got to that score. But now with the ball, they're just coming up against a very good Central Zone, and that is 4 more. Sloppy work indeed. It's been a long day. आई थिंक बाबाशीष अब औपचारिकताएं ही बची हैं. बिल्कुल अब ऐसा भी लग रहा है वेस्ट जोन के खिलाड़ियों के द्वारा कि वो अब गिवन अप कर चुके हैं. जी, रियलिस्टिक होते हैं. जब आप इतनी क्रिकेट खेल लेते हैं तो आपको थोड़ा तो अंदाजा होता है कि मैच का रुख अब पूरी तरीके से मुड़ चुका है सेंट्रल के पक्ष में. गिव अप तो नहीं कहेंगे, रियलिस्टिक कहेंगे इसे. कोशिश तो पूरी की है उन्होंने. जिस तरीके से रन उन्होंने बोर्ड पर लगाए और उसके बाद विकेट भी चटकाए थे जब गेंदबाजी शुरू हुई तब. 18 रन बचते हैं अब 24 गेंदों में. बाबाशीष, एक मोमेंट था जब शमी का कैच जो छूटा कवर की दिशा में, उस समय उसके बाद उन्होंने 6 छक्के लगाए जो लगातार लगाए. शायद वो गेम चेंजिंग मोमेंट बन सकता था. बिल्कुल. Solanki is third. Good looking shot, but straight to the fielder. Nicely bowled. Really well bowled. This now they'll get the run. Underarm throw very wide of the keeper. This was really well bowled from Solanki. Lot of loop, lot of flight. Now Satish on strike. अच्छी गेंद पुश किया उसे कवर की दिशा में. कोई रन नहीं. इस ओवर में धीमा कराने की कोशिश कर रहे हैं और धीमे करा दी है. और इस बार बॉल की पिच तक पहुंच गए थे सतीश अपना जौहर दिखाते हुए बल्लेबाजी में. उनके खाते में भी अब 2 चौके आ चुके हैं. बिल्कुल. और अब सिर्फ 13 रनों की दरकार. 20 गेंदें हैं उनके बैग में. Well, only 7 more needed. छोटी गेंद और उसे मिड विकेट की दिशा में पहुंचाया. शानदार 6 छोटे कद के सतीश के द्वारा. अब अपने हाथ खोलते हुए सतीश अभी तक सिंगल डबल्स पर ही स्कोर कर रहे थे, पर एक छक्का और एक चौका लगा चुके हैं इस ओवर में.
अच्छी गेंद खेला उसे लॉन्ग ऑफ की दिशा में, फील्डर मौजूद है, एक ही रन। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति और 200 रन पूरे हुए सेंट्रल जोन के। 3 ओवरों में सिर्फ अब 6 रनों की दरकार। शमी की शानदार पावर हिटिंग और अमित की एंकर रोल के जरिए 200 रन प्राप्त कर चुकी है सेंट्रल जोन की टीम। एंकरिंग भी उन्होंने की है 182 के स्ट्राइक रेट के साथ, तो ये मानना पड़ेगा जिस तरीके से पेस किया है अपने इनिंग्स को। फिर से अच्छा शॉट, एक और रन का इजाफा। शायद यह मैच का आखिरी ओवर हो सकता है बाबा शीश। फॉरवर्ड पुश के बाद क्रीज में बहुत पीछे गए और उसके बाद एक रन खेला। Is that wide? Yes, it is. सिर्फ 3 रन शेष। And a dot ball. But I think there is plenty of positives for West Zone to take in terms of how they batted. शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में, एक ही रन। अब स्ट्राइक पर अमित क्या फिनिश करना चाहेंगे अब? Very lucky that the back foot was back on the ground. You're right, he wanted to go for the big hit. लास्ट बॉल ओवर की। Only of the inside half of the bat. It goes to the deep fielder. It's a single that'll leave just one more to get. दो ओवरों में 1 रन की आवश्यकता। और अगर इस टूर्नामेंट की कंडीशंस की बात की जाए तो अगर मैच टाई होता है लीग मैचेस में तो 2 बार सुपर ओवर खेला जाएगा, और अगर उसमें भी टाई रहा तो फिर पॉइंट शेयर होंगे। पर यदि फाइनल जो खेला जाएगा आगे उसकी बात की जाए तो उसमें फिर अनलिमिटेड सुपर ओवर होंगे अगर टाई होता है तो। Fumble, they'll not get the run though. संदीप है ना बॉलर? संदीप आई थिंक। Sandeep, the bowler. And that is the game done. It's a victory for Central Zone then. Remember, they won the toss. They wanted to bowl first. It was West Zone and their batters who put up a fight with the bat, definitely. Scored 205. But now, in reply, this run chase largely due to how Shami batted, 84 of 32. And Amit Paul now finishing with an unbeaten 77 has given Central Zone first points on the board. शानदार रन चेस सेंट्रल जोन के द्वारा 7 विकेट से यह मैच अपने नाम कर लिया। टॉस जीता था, पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया था, और जो पावर प्ले में हिटिंग की थी वेस्ट जोन के खिलाड़ियों ने और सलामी बल्लेबाजों ने, उसे देखकर एक बार की लगा था कि यह गलत निर्णय, पर उसी अंदाज में चेस किया फिर उस स्कोर को। बाकी तो आप फिनिशिंग बोलेंगे उसमें।
उनके पास यूजुअली क्योंकि ये इसका सर्वर कहाँ पे है और वो कहाँ पे बता रहे हैं यही वाला गया था छोड़ दिया वहां पे।
Right, then welcome to the first presentation party here at the All India Interzonal Veterans Tournament. We saw a fantastic high-scoring game altogether. That's what we expected when we came to this tournament. We really thank the Chhattisgarh Veterans Cricket Association for organizing this tournament, giving us a glimpse into these cricketers who have had their best years behind them, but very much still entertaining in the brand of cricket that they have played. In this first game, of course, as we mentioned, it was up to Central Zone, who defeated West Zone by 7 wickets, so congratulations to them. Congratulations also to West Zone to now put up a fight. They know how good this surface is. They'll come back stronger altogether. I've got a couple of dignitaries with me to give away the Player of the Match award. I've got, first of all, Mr. Sudhir Kulkarni. Thank you so much, sir, for being there. He's the BVCI Secretary, of course. I've also got Mr. Vinod Fadke. He's the Vice President of BVCI. Thank you so much, Vinod, sir. As I said, performances all over. In that first innings, we saw Mayank and Hiral batted brilliantly. Mayank scored 63 of 34. That was a different kind of innings. Hiral had to stay there for a little longer. But in that run chase, when Shami kept on hitting those sixes, this game kind of further went away from the reach. So the Player of the Match award goes to him for his 84 of 32, 6 fours and 9 sixes. For Shami, if you can come and collect your award. Excellent finish from Amit there in the end to score 77, stay unbeaten. It was Shami's hit. Shami, if I can just power hitting. Shami, the ने ये डिसाइड किया था कि हम फील्डिंग करेंगे और हम चेस करने के लिए ही जाएंगे, क्योंकि हमारे जो कैप्टन है मोस्ट सीनियर प्लेयर हैं, उन्हें इतना एक्सपीरियंस है क्रिकेट का और विकेट्स का, तो हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वो सिर्फ हमें गाइड करते रहते हैं और हम उसको फॉलो अप करा करते हैं।